told in my matter, Mr. Adani on October 16, 2023, got my friend to his office in Ahmedabad and threatened him with dire consequences to file a fake affidavit. Actually, it was Mr. Adani's in-law, Mr. Cyril Shroff, who filed the fake affidavit and forced him to sign it. Even today, every mid-level official in Adani's office calls mid-level officials in the CBI and says 161 statement change karaiye, aapka sir ko bulaiye, madam ke against mein statement dijiye. I am telling the CBI via you, madam, please take a 164 statement once and for all. Don't keep calling back people. A particular business house, and she has been tortured like anything. The matter may be referred to the privilege committee. Suo privilege committee has to take action on this. Because very serious allegation. A member of parliament is being tortured. पर मेरा केस है, मेरा केस है, मैंने कंप्लेन किया है, उसको सीबीआई और ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है और इसीलिए इस सदन में नो क्या ये मेरा केस है लोकपाल पर, मैंने जो है कंप्लेन किया हुआ है। पिछली बार संसद से निकाल दिया गया था महुआ को, लेकिन इस बार जब लौट कर आई तो महुआ इस बार सीबीआई और ईडी के जांच के धागे खोल दिए। जिस अडानी के मामले पर सदस्यता गंवानी पड़ी थी, आज उसी मामले पर संसद में महुआ ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे को अपनी सीट से खड़ा होकर सभापति के सामने गुहार लगानी पड़ी। विपक्ष के सांसदों ने कहा कि ऐसे मामले पर प्रिविलेज लाया जाए, सांसद के सम्मान का यह मामला है, ऐसे मामले पर संसद के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों को ऊपर नोटिस होना चाहिए। विपक्ष के तमाम सांसद जब खड़े होकर महुआ के पक्ष में खड़े हुए तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को लगा कि अब मामला हाथ से निकल रहा। ऐसे में वो सभापति के सामने खड़े होकर कह रहे थे कि अब मेरा व्यक्तिगत है मामला, कोर्ट में चल रहा है, लोकपाल के पास यह मामला है। इस मामले में मेरे ऊपर जो आरोप लग रहा है, जो दस्तावेज हमने प्रस्तुत किया था, जिस वजह से ये पूरा जो है सीबीआई और ईडी की जांच की बातें आज संसद में हो रही है, ऐसा मेरे कहने की वजह से दस्तावेज मेरे पास है, इसे कोर्ट में नहीं लाया जाए। महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद पूरे तेवर में बंगाल से जीते सांसदों ने संसद के अंदर बीजेपी को इधर पिछले कई दिनों से मुसीबत में डालते रहे हैं। किसी भी बजट का मुद्दा हो, टीएमसी के सांसद केंद्र सरकार के नाकामियों की एक एक पोल जो है उसका सीधे तौर पर उसके एक एक पोल के धागे खोल रहे हैं। कागजों में लिखा हुआ एक एक चीज आंकड़ों के साथ, गिनती के साथ, गलतियों के साथ सदन के सामने रख रहे हैं। महुआ का आज का जो तेवर है वो संसद में बीजेपी के सांसदों को सीधे तौर पे खामोश कर दिया था। बीजेपी के पास आज बोलने के लिए कोई शब्द नहीं था। महुआ लगातार बोलती रही, आधे घंटे तक बोली। विपक्ष के सांसद महुआ के लिए मेज थपथपाते रहे और सत्ता पक्ष के सांसद खामोश बैठे रहे। महुआ ने अपने स्पीच की शुरुआत अंग्रेजी में की और कहा कि यह दुर्भाग्य है कि जब मैं इसके पहले संसद में बजट पर जब बोल रही थी, राष्ट्रपति के धन्यवाद पर जब हम बोलना शुरू किए तो प्रधानमंत्री को संसद छोड़ के जाना पड़ा था। जब मैं बोल रही थी तो प्रधानमंत्री जी चले गए और आज वित्त के मामले पर बोल रही हूं तो वित्त मंत्री नहीं है। ये सीधे तौर पे महुआ का कहना है कि जब भी विपक्ष के सांसद संसद में बोलते हैं, सरकार में बैठे लोग जिनकी जिम्मेवारी है वो हमें सुनना नहीं चाहते हैं। सुनिए महुआ का तेवर, निशिकांत दुबे क्यों खड़े हो गए, क्यों लगाने लगे स्पीकर से गुहार, और विपक्ष के सांसदों ने क्यों कहा इस पूरे मामले की होनी चाहिए जांच। आखिर ईडी, सीबीआई अडानी के मामले पर महुआ मोइत्रा से क्या पूछताछ में सवाल किए थे, जिसकी आवाज आज संसद में गूंजी तो बीजेपी में बौखलाहट छा गई। Madam, I have to say I'm deeply pained at the very onset. I must point something out. When we talk on the governor, speak on the president's address, the Honorable Prime Minister leaves the chamber. Today, when we are speaking on the finance bill, the Honorable Finance Minister leaves the chamber. We members of the opposition are deeply pained by this. We hope that the government will take notice of our pain and be present in the House each time that we speak on relevant issues. Theodore Roosevelt, the 26th President of the United States, had said, in any moment of decision, the best thing you can do is the right thing. The next best thing you can do is the wrong thing.
And the worst thing you can do is nothing. The Honorable Finance Minister has made a mockery of the people of India in this union budget by doing absolutely nothing. Whatever little changes are there are regressive and ill thought out. Priority 6, energy security. The less I speak about this, the better it is. Energy security is security for best friends. It's created by allowing best friends to import low-grade quality coal, mark it up as high-grade quality coal, and sell it to state development corporations at the cost of the country's environment, at the cost of the health of our citizens. Priority 7, the finance minister said, was infrastructure. She announced in a true style of Shagun that she's gifting the nation 1,11,111 crores. 111,111. This is flat on last year. Sadly, most of this will go towards crony capitalists. You'll make roads that have potholes, you'll have airports that leak, you will have bridges that fall out, and the taxpayer will pay for this. The budget speaks of private sector participation. But remember one thing, they bid out 6 airports to one company for a fee to be paid by the government. Then they created a policy that allows the regulator to keep increasing the user development fee. So actually, it's the flying public of India that are paying for this. Priority 8. Innovation, research and development. Grand words, these are just grand words. The finance minister seems to have forgotten that most entrepreneurs register their product and software IPs in foreign countries like the US, since IP registration system for patents is a complete failure in our country. Unless you fix patent registration, this is not going to happen. The last priority she talks about is next generation reforms. This is also another Jamla. She says, I propose to earmark a significant part of a 50-year interest-free loan for competitive federalism. So this is double speak. We'll keep this money in our pocket. If Nitish ji and Chandrababu ji see through our Jumla and they make a big fuss, we'll have some additional funds to keep them happy and to keep the government going. Finally, I have to mention one interesting fact, and I hope that the Treasury benches will have the patience to hear me out. Please. I wholly agree with the Finance Minister on one thing. The budgets for the CBI and the ED have been reduced this year, and I was wondering why. Is it because the voters didn't like the fact that you were using the CBI and the ED to go after the opposition and file fake affidavits? Or is it because you have outsourced the CBI and the ED completely to a businessman in Ahmedabad who's controlling the whole thing? Why have you reduced it? Number one, the former Maharashtra Home Minister highlighted how BJP leaders and agencies have threatened him to filing a fake affidavit. In the case of Sandesh Khali in West Bengal, the women have confirmed on video that BJP leaders forced them to file fake statements. Similarly, I'm told in my matter, Mr. Adani on October 16, 2023, got my friend to his office in Ahmedabad and threatened him with dire consequences to file a fake affidavit. Actually, it was Mr. Adani's in-law, Mr. Cyril Shroff, who filed the fake affidavit and forced him to sign it. Even today, every mid-level official in Adani's office calls mid-level officials in the CBI and says, 161 statement change karaiye, aapka sir ko bulaiye, madam ke against mein statement dijiye. I am telling the CBI, why are you, madam? Please take a 164 statement once and for all. Don't keep calling back people at Adani's behest to change 161 statements to implicate me. It's going to get you nowhere. Let us reduce the CBI and the ED budget to zero. Let us, Mr. Adani pay the full 1,500 crores. Let us outsource it completely to him. End of story. In short, this Kursi Bajao budget is a desperate attempt by the government to stick its head in the sand and act like that the mandate of 2024 never happened. But the coming days are going to prove the instability of this government and the inefficacy of its economic policy. We wait for that day. Thank you very much, madam. Thank you. माननीय सदस्य member has made specific allegation against the government and the particular business house, and she has been tortured like anything. The matter may be referred to the privilege committee. Suamoto privilege committee has to take action on this. Because very serious allegation, a member of parliament is being tortured by a business house, and still it is being doing. That has to be looked into by the privilege committee. The privilege of सभापति महोदया, ये जिस केस के बारे में जिक्र कर रही हैं, वो लोकपाल पर मेरा केस है। मेरा केस है, मैंने कंप्लेन किया है, मेरे कंप्लेन पर वो केस है। वो मामला सब जुडिस है, उसको सीबीआई और ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है, और इसीलिए
इस सदन में नो 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 क्या, ये मेरा केस है, लोकपाल पर मैंने जो है कंप्लेन किया हुआ है और ये केस मेरे ऊपर है, इसीलिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। ये कुछ भी हो रहा है तो दर्शन हीरानंदानी को यदि हिम्मत है जिसके बारे में ये बात कर रही है, उसको हिंदुस्तान में आके सीबीआई उसको बुला रही है, धन्यवाद, वो आ धन्यवाद। क्यों नहीं रहा है? माननीय सदस्य श्री अरुण नेहरू जी। प्लीज कंटिन्यू, प्लीज सदस्य, प्लीज 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 माननीय सदस्य, प्लीज। अरुण नेहरू जी, माननीय सदस्य। मदिपिकुरिया